हेलो टू एवरीवन। ये स्टेनो की डिक्टेशन क्लास चल रही है स्पीड पैसेजेस की, और आज हम स्टार्ट करेंगे पैसेज नंबर 30। पैसेज नंबर 30 स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 2, और स्पीड रहेगी नॉर्मल 85 to 90 वर्ड पर मिनट। और जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे साथ वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। हेलो कुलदीप। और सभी स्टूडेंट्स वीडियो लाइक कर दो। कुलदीप, कल क्लास नहीं ली थी आपने? हेलो टू एवरीवन। कुलदीप, पैसेज नंबर आज 30 है ना? टेलीग्राम पे चेक करो एक बार। एक बार टेलीग्राम पे चेक करो, आज का पैसेज नंबर 30 है ना? आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? हेलो टू एवरीवन। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं क्लास में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, और स्टेनो की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम 2 का पैसेज नंबर 30। सो बी रेडी फॉर योर डिक्टेशन। पैसेज नंबर 30 वॉल्यूम 2 कैलाश चंद्र मैगजीन। बाकी बच्चे जो क्लास में आ गए हैं वीडियो को लाइक कर दो, अपनी अटेंडेंस लगा दो, कमेंट बॉक्स में अपना नाम मेंशन कर दो। सभी स्टूडेंट्स जो भी क्लास के लिए आ रहे हैं, जो बच्चे भी क्लास के लिए आ रहे हैं अपना नाम मेंशन कर दो। और स्पीड पैसेजेस की क्लास हो रही है स्टेनो की, और आज का पैसेज है 30 वॉल्यूम 2। पैसेज नंबर 30 वॉल्यूम 2 फ्रॉम कैलाश चंद्र मैगजीन। बाकी बच्चों को भी आ जाने दो, अपना नाम मेंशन करते रहो सब लोग जो जो क्लास में आ रहे हो। सभी स्टूडेंट अपना नाम मेंशन कर दो जो भी बच्चे क्लास में आ रहे हैं। पैसेज नंबर 30 वॉल्यूम 2 फ्रॉम कैलाश चंद्र मैगजीन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेसिव मैगजीन। प्रोग्रेसिव मैगजीन अभी फरवरी चल रही है, थोड़े दिन में ये ख़त्म हो जाएगी, 1-2 दिन में, तो मार्च की स्टार्ट कर देंगे। ओके। और अपने प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करते रहो, एग्ज़ाम आने वाला है आपका। कल कुलदीप हमने कौन सा पैसेज किया था? कुलदीप, कल हमने कौन सा पैसेज किया था प्रोग्रेसिव का? नंबर मेंशन करो। आई थिंक 22 था, आज 23 करना है। बाकी बच्चे भी अपना नाम मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, और सेशन को लाइक कर दो। स्टेनो की डिक्टेशन बैच चल रहा है, ये वॉल्यूम 2 का पैसेज नंबर 30 स्टार्ट करूँगी थोड़ी देर में। गुड इवनिंग गणेश। वीडियो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट्स। कल 21 था, आज का पैसेज 22 है। फरवरी का प्रोग्रेसिव मैगजीन पैसेज नंबर 22, और वॉल्यूम 2 अभी हम स्टार्ट करेंगे पैसेज नंबर 30। 2 मिनट में डिक्टेशन स्टार्ट करूँगी, बाकी बच्चों को भी आ जाने दो। और सेशन को लाइक कर दो सभी स्टूडेंट्स जो भी क्लास में आए हुए हैं बच्चे, सेशन को लाइक कर दो। और न्यू एडमिशन जिससे भी लेना है स्टेनो का, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन है। अभी न्यू बैचेज स्टार्ट हुए हैं तो आप लोग एडजस्ट हो जाओगे उसमें। स्कोर कार्ड आएगा, स्किल टेस्ट हो जाएगा शायद उसके बाद, अभी टाइम लगेगा स्कोर कार्ड में। सेशन को लाइक कर दो। और पैसेज नंबर 30 है, सो बी रेडी फॉर योर डिक्टेशन। पैसेज नंबर 30 वॉल्यूम 2
from Kailash Chandra magazine. ये स्टेनो का बैच चल रहा है, स्पीड क्लास का डिक्टेशन चल रही है. जो बच्चे डिक्टेशन लिखना चाहते हो वो क्लास में रह सकते हो. ये स्टेनोग्राफी की स्पीड बैचेस, इसके डिक्टेशन बैच चल रहा है. स्पीड रहेगी 85 to 90 वर्ड पर मिनट. और सेशन को सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दो. बस 2 मिनट में डिक्टेशन स्टार्ट कर रही हूँ. सो बी रेडी फॉर योर डिक्टेशन. अपनी नोटबुक, अपनी पेंसिल रेडी रखो. वॉल्यूम 2, पैसेज नंबर 30 फ्रॉम कैलाश चंद्र मैगजीन. आप लोग रेडी हो क्लास के लिए? यस लिखो कमेंट बॉक्स में. गुड इवनिंग उजाला. कमेंट बॉक्स में यस लिखो जो बच्चे डिक्टेशन के लिए बैठे हुए हैं क्लास में. ओके ओके. So now I am going to start your dictation. Passage number 30, volume 2. Speed रहेगी 85 to 90 word per minute. Dictation start now. May I, madam, draw the attention of the honorable minister to an important committee set up by the government of India in 1958 under the chairmanship of Mr. Niyogi, who was asked to inquire into the various problems of railway road coordination. Their preliminary report appeared some time ago and it was even circulated to all the state governments for their opinion. But to my regret, I have to say that the work of this committee has been very much hindered as a result of the indifference and, may I say, careless negligence on the part of the state governments as well as on the part of the ministry concerned in taking up this question and in pursuing it so that we may be able to have a clear and comprehensive picture of the transport situation in the country. Now, railway transport, like any other mode of transport, is suffering under a major handicap. The handicap being that we do not know, nor does the railway ministry know what the exact quantum of transport requirement in the country is and what the rising demand is which the railways are expected to cater to in future. Certain targets which have been worked out in the third plan have been given to us in the second plan. We were given certain targets, but unfortunately, madam, may I point out that those targets were either gross underestimates or exaggerations. Throughout, we have seen that we have not been able to have a well coordinated and progressive development of the transport system, and in particular the railway system in the country. So anything we suggest today will have that kind of air
of unreality without knowing fully or adequately what exactly the transport needs in the country are. We are not in a position to discuss or dilate upon the problems of the railways or the transport itself. Madam, last year when I was speaking on the budget, I pointed out that there had been planning of some sort, but within this planning there had not been sufficient planning in the functioning of the administration. There has not been planning in carrying out the various phases of the program enunciated in the plan or in the budget. Frequently, we come across the statement by the Honorable Minister that the railways have not been able to fulfill certain things. I went through the pages of the budget papers and also the speech of the minister. I came across this significant expression: wherever there are failures or shortfalls in performance, we are told that these are mainly due to unpredictable factors or factors beyond control. I do not think that some of the factors which my honorable friend would like us to believe that they are unpredictable or uncontrollable cannot be anticipated. For instance, I may draw the attention of the Honorable Minister to one important fact, that is, we have been supplying since some time past empty haulage for a long distance to collieries, to steel factories, and so on. We are told that this empty haulage is unavoidable, that we have to find empty wagons to steel factories and collieries to carry raw material, or perhaps coal and the like. So, for a long distance, we find wagons going empty, but if there had been a research cell, an organization in the ministry to find out ways and means of utilizing these wagons fruitfully by avoiding bottlenecks in between, we could have solved the transport difficulty to a certain extent. I do not want to be told by the minister that this is a physical impossibility. Even in the advanced countries of the world, every movement of wagon, coach and engine is planned before it is put into operation. It is unfortunate and tragic that in this country, after a decade of planning, we have not been able to think in terms of planning while executing the works now in regard to some of the general problems of the railways. I would say
first of all, that the rise in demand is so great that we have to be prepared to provide not only adequate but also effective transport facilities to our people. I need not tell the house that the railway transport system in general is greatly dependent or interdependent on the general economy of the country. But during the last or 1 decade, there has been one significant factor that has to be appreciated. That is the demand for transport is increasing at a faster rate than the rise in the national income or the rise in production in any sector or in any industry. This is a factor that has not been adequately appreciated. Even if it has been adequately appreciated, even it has been adequately appreciated, no attempt, no sincere effort has yet been made to carry out the fulfillment of the needs of all the sectors of our economy. Stop. जिन बच्चों ने डिक्टेशन कंप्लीट कर ली है कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। अभी हमने जो पैसेज कंप्लीट किया है वो स्टेनो का केसी वॉल्यूम का पैसेज नंबर 30 कंप्लीट किया है, 85 to 90 वर्ड पर मिनट। और जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया डिक्टेशन, वीडियो लाइक करो, सेशन को लाइक करो और कमेंट में यस लिखो या डन लिखो। ये स्पीड पैसेजेस की क्लास चल रही है स्टेनो की, 85 to 90 वर्ड पर मिनट स्पीड थी शॉर्ट हैंड की। जो बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। बाकी बच्चे यस लिखो कमेंट बॉक्स में। ओके गणेश। जो बच्चे डिक्टेशन लिख रहे थे डन लिखो। ओके उजाला। ओके कुलदीप। ओके सागर। और जो बच्चे नए हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे ही आपको डिटेल्स मिलेंगी कि क्लास कब होगी कब नहीं। ओके अंजलि। ओके यश। नेक्स्ट डिक्टेशन होगी फरवरी की 2025। ओके चौहान सागर डन। ओके लाइक कर दो वीडियो सभी स्टूडेंट जो डिक्टेशन लिख रहे हैं। पैसेज नंबर 22 फरवरी की होगी नेक्स्ट डिक्टेशन 2025। 1-2 दिन में हम ये कंप्लीट करेंगे। ओके क्रिश। ओके प्रखर डन। सेशन लाइक कर दो सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डिक्टेशन जो होगी आपकी होगी पैसेज नंबर 22 प्रोग्रेसिव मैगजीन। 2 मिनट रेस्ट करो, उसके बाद स्टार्ट करूंगी डिक्टेशन। 45 हो रहे हैं, 48 पे डिक्टेशन स्टार्ट करूंगी। और न्यू एडमिशन स्टार्ट हो गई है। जो बच्चे व्हाट्सएप पे डिटेल्स ले लो जो एडमिशन लेना चाहते हैं स्टेनोग्राफी के, शॉर्ट हैंड के एडमिशन स्टार्ट है, बेसिक टू एडवांस कोर्स। ओके जूम ऐप पे डेली क्लास होगी। केसी अभी हमने कंप्लीट किया है, कैलाश चंद्र वॉल्यूम पैसेज नंबर 30। अब जो स्टार्ट करेंगे फरवरी का 22 पैसेज नंबर प्रोग्रेसिव मैगजीन। डेली हमारा एक पैसेज केसी का रहेगा और एक प्रोग्रेसिव का। और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ सभी स्टूडेंट्स जो भी डिक्टेशन लिखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और व्हाट्सएप का नंबर भी गिवन है, जो भी डिटेल्स चाहिए आप क्वेरी कर सकते हो एडमिशन रिलेटेड। हिंदी की डिक्टेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़े दिन में स्टार्ट करूँगी हिंदी की, उसका टाइमिंग अलग रहेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जो बच्चे क्लास में नए हैं। ओके संध्या। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जो बच्चे स्पीड पैसेजेस पे हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डिटेल्स उसी पे मिलेंगी। जो भी शॉर्टकट्स होंगे, शॉर्ट फॉर्म्स होंगी, सब उसी पे प्रोवाइड होंगी। ओके
और न्यू एडमिशन लेना है तो व्हाट्सएप पे क्वेरी करो, व्हाट्सएप पे ही डिटेल्स मिलेंगे आपको। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टेनोग्राफी के न्यू एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। चैनल पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिए जाके। बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट डिक्टेशन। चैनल पे डिटेल्स गिवन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, डिटेल्स ले लो व्हाट्सएप करके। ओके, हाँ मैटर बोलूँगी। फरवरी का पैसेज नंबर 22, बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट डिक्टेशन। फरवरी का प्रोग्रेसिव मैगजीन का पैसेज नंबर 22, सो बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट डिक्टेशन। और जो नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डेली उसी पे अपडेट्स मिलेंगे आपको। न्यू एडमिशन के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल्स ले लो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। So now I am going to start your dictation, passage number 22, February 2025. यस लिख दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। रेडी हो आप लोग सभी स्टूडेंट्स? यस लिख दो जल्दी से। पैसेज नंबर 22। ओके 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 क्रिश, ओके अंजलि, ओके पैसेज नंबर 22। ओके गणेश, February 2025. So now dictation start now. I must be over a year since I first expressed my desire to have a frank dialogue with the representatives of organized labor. I am glad that my colleague has now arranged such a meeting and that you have responded to our invitation. This is one of the most crucial meetings in recent year. We are at a significant stage in the evolution of our political and economic system. Trade union leaders of allegiance to different political ideologies. Such diversity is expected in an open democratic society. I do, however, hope that within the broad spectrum of organized political opinion ranged around this table, there is a basic unity of purpose and a determination to jointly explore avenues of cooperation in tackling our problems of poverty and social injustice. The Minister of Labour and Employment has posed certain specific issues for your consideration. I sincerely hope that at the end of our deliberations, certain definite consideration are reached. For this, it is necessary to approach the problems facing us with temper and spirit required for their solution. We have here leaders who speak for organized labor, who seek to reflect their hopes and aspirations and to ventilate their grievances. It is perhaps understandable that segment of society should equate its own sectional interest with those of the whole during the last 2 or 3 years. I have been
deeply anxious about the deterioration in industrial relations. Strikes, lockouts, and closures have become more frequent and less peaceful. One wonders whether those who speak for management always keep in view the larger picture of Indian poverty. We have strong trade unions to struggle for the interest of labor. We have equally vocal and close-knit organizations of management keen and able to project their point of view, but who is to look after the interest of the vast numbers of the unorganized and the voiceless. I am not speaking merely of consumers, although their interest must also be reconciled with those of labor and management, but in a country with depressingly low standards of consumption, the emphasis even on the interest of consumers become irrelevant beyond a point. When trade union leaders talk of protecting the living standards of the working class, or when management use sophisticated jargon about incentives, they hardly seem to show any concern about the problems of the really poor people. When we talk of the larger social responsibilities of labor, it is said that about labor will give of its best only if economic and social policies are more radical and the fruits of economic growth are not monopolized by the few. I believe in radicalism, but it must deliver the goods. I am against any kind of privilege if it means reward or recognition unrelated to functional efficiency. World economic history and our own experience point to the fact that privileges, however defined, become entrenched in a period of economic stagnation rather than in a period of growth. The emphasis on a faster rate of growth does not therefore represent any retreat from radicalism or socialistic principles. On the contrary, a higher rate of growth is an essential prerequisite to welfare on an enduring basis. It does not matter to the privileged whether rate is 2% or 6%. They already have the means of a good life at their command. A higher rate of growth is vital for those are currently unemployed or underemployed. A speedy and substantial increase in production is necessary to generate resources for expansion of employment
Ever since independence, industrial expansion has acted as the pace setter for economy. But in the 2 years, it is the increase in agricultural production that has kept the economy moving forward. The growth of agricultural production since 2007 to 8 has been satisfactory and has helped to maintain a moderate increase in per capita income. But industrial production has failed to reach its targets in the first 2 years of the fourth plan. It has been only around 6% instead of the expected 10%. An increase in industrial output is essential to the structural transformation of our economy. It is so vital for economic and political self-reliance. Not for a moment I am suggesting that the lower industrial production in the last few years is due solely or even substantially to industrial strikes, shortages of raw material, obsolete administrative procedures, mismanagement and misdeployment of resources have also hit production. But no observer of our scene will fail to concede that lack of industrial harmony has surely been an important contributory factor. I understand that the number of man days lost as a result of strikes has nearly 3 times, from 6.5 million or so in 2005 to about 19 million in 2010. What we have to consider is whether we can reduce this wastage within the framework of our present social and political order of the country. Stop. कमेंट बॉक्स में यस लिख दो सभी स्टूडेंट्स जिनकी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है. कमेंट बॉक्स में डन लिख दो सभी स्टूडेंट्स जिनकी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है. और कल की जो डिक्टेशन होगी वो आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. और जो बच्चे न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं स्टेनोग्राफी के, वो व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं. ओके, स्टेनोग्राफी के न्यू एडमिशन स्टार्ट हैं. जो बच्चे स्टेनो पे एडमिशन लेना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर गिवन है. व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डिटेल्स ले सकते हो और स्पीड पैसेजेस की क्लास ले सकते हो. और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. डेली यूट्यूब पे लाइव सेशन हो रहा है अभी. ठीक है, जो भी डिटेल्स होंगी आपको टेलीग्राम पे बता दी जाएंगी. ओके, डन लिख दो सभी स्टूडेंट्स. जो बच्चे डिक्टेशन लिख रहे थे डन लिखो, यस लिख दो. जिन बच्चों की डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है यस लिख दो कमेंट बॉक्स में. ओके, बाय ऑल ऑफ यू. कल जो टाइमिंग होगा क्लास का वो बता दिया जाएगा टेलीग्राम पे. टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है टेलीग्राम का. ओके, बाय ऑल ऑफ यू.